चैप्टर का नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। ओके, पैनकेक्स क्या होता है बेटा? पैनकेक्स जो छोटे छोटे होते हैं। छोटे छोटे क्या? सेम मेकअप ब्रांड है इधर। मेकअप ब्रांड है। मेकअप ब्रांड है। पैनकेक एक मेकअप ब्रांड का नाम है जो अभी बंद हो चुका है। यस, तो पोएट्स में एस है और पैनकेक्स में भी एस है। दोनों इसका मतलब क्या है? दोनों इससे क्या ध्यान रखें? पोएट्स में भी एस है, पैनकेक्स में भी एस है। बॉस का नाम क्या है? भाषण में भी कितने एस है? दो दो। एस तो भाषण में एक ही होगा। भाषण में एस एक ही होगा ना। भाषण एस एस भाषण, भाषण में एक एस है, उससे पहले दो एस है। ठीक है, और चैप्टर में भी कितने एस है? दो एस है। ठीक है, तो याद रहेगा ना, पोएट्स एंड पैनकेक्स एस एस भाषण। ही वॉज द बॉस। ओके, तो पोएट में दो बार ये है, जो नेम में दो बार ये है। इसे कुछ है, इसे एक होता है, देखो जेमिनी है ना, जेमिनी, जेमिनी GEMINI है ना, डबल आई आ रहा है, डबल ई नहीं है ना, डबल आई भी है ना, जेमिनी है ना। ओके, ऐसे ऐसे अगर कुछ याद करें है ना, तो ये तो याद हो जाएगा। कैरेक्टर का नाम बताइए बेटा। बॉस था एस बसन, द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। ही हैड ए लाइकिंग फॉर एरुडिएट एंड स्कॉलरली पीपल, है ना। अच्छा, ये बताओ पोएट्स एंड पैनकेक्स में हुआ क्या था? क्या है स्टोरी, बताइए। यस, नहीं पता। ओ भाई, तुम बोलो। सर इसमें सभी जो हमारे जो राइटर है वो बताते हैं कि जो एक जो स्टूडियो था गेमिंग नाम का, वहाँ पर कैसे काम वाम होता था और अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स थे वहाँ पर कैसे काम चलता था। और लास्ट में फिर वो अपना एक वो कोइंसिडेंस वाला बताते हैं कि वो मीटअप करते हैं एक पोएट से, वो कुछ इंग्लिश में बोल के आता है, वो समझ में नहीं आता, फिर उसकी वो बुक मिलती है लास्ट में। ठीक है, स्टीफन स्पेल्डर यही है, ये होता है पूरा। क्या मेन मतलब क्या है स्टोरी का? सेंट्रलाइट मोटिव तो नहीं है स्टोरी का, इसमें से एक्सपीरियंस विद एज पर्सन है, ऑटोबायोग्राफी जैसी है। हाँ वो चीज है, उसका एक्स्ट्रा है। ऑटोबायोग्राफी में सर अपनी फॉर्मल लाइफ के बारे में बताता है। डेज विद माय बॉस, उसका वो बायोडाटा। क्या बोल रहे हो? पोएट्स एंड पैनकेक्स एंड एक सब मतलब इंडियन जो हम लोग का जो मूवीज, जो इंडियन जो तुम्हारा सिनेमा होता है उसके बारे में है। वहाँ पे कैसे कैसे ये होता था उसके। तो पोएट्स एंड पैनकेक्स मतलब इट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अशोका मित्तन's बुक माय ईयर्स एंड बॉस, माय ईयर्स विद बॉस। माई ईयर्स बोलते हैं ना, जैसे डायरेक्टर है, किसी के साथ कैसे काम किया वहाँ पे। इट इज़ ए ह्यूमरस एंड इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस व्हाइल वर्किंग एट जेमिनी स्टूडियोज इन Madras. The chapter comprises the description of personalities popular in the early days of Indian cinema. The focus of the chapter is on the various eccentric personalities and the vain behavior of the people in the industry. ठीक है बेटा। बाहर से कौन आए थे? वो एक मोरल रियरमेंट आर्मी। क्या नाम था? मोरल रियरमेंट आर्मी। 20 कंट्रीज के। अच्छा, ओके, एक बार चेक करते कौन आए थे कौन नहीं। 200 अच्छा, मेकअप डिपार्टमेंट में कौन थे बेटा? मेकअप डिपार्टमेंट, हाँ, the makeup department of the Devini studio was located in the building which was said to be Robert Cleve's home. The makeup room looked like a what? Hair cutting salon with large mirrors and lights at the angles. The makeup product with the brand name Pancake was used in the studios. Thus, it was not a very pleasing experience to get the makeup done here. The makeup department of Gemini Studios was a symbol of national integration. Initially, it was headed by a Bengali, then by a Maharashtrian, who was assisted by a हाँ
Dharwar, Kannadiga, and others from different states of India. जैसे मुंबई में होता है ना कि बहुत सारे जाते हैं, हर कंट्री से अलग अलग, हर स्टेट से अलग अलग है ना. कभी अमिताभ बच्चन जी गया मतलब यूपी से, कभी मिथुन चक्रवर्ती गया बंगाल से, है ना. कभी यूपी से भी बहुत सारे गए है ना, कभी बिहार से गए, है ना. ऐसे ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं. तो फिल्म इंडस्ट्री में तो नेशनल इंडिकेशन के बारे में पता चल जाता है कि हर डिफरेंट जगह पर काम करता है इंडिया के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन. यस. तो हर्ची एंड द ऑफिस बॉय. There was a hierarchy in the makeup studios. The chief makeup man dressed up the leading actors and actresses. His senior assistant looked after the second hero and heroine, while the junior assistants took charge of the main comedian. The actors who played the crowd were looked after by the office boy of the department. The office boy, कौन थे बेटा? Was a man in his early 40s. और था, who had joined the studios to be a top film star, screenwriter, director और lyric writer. ठीक है. और कोई था? वो नहीं था. अब उसे जलता था क्योंकि उसे हायर पोस्ट मिली थी. जैसे पता ही तो नहीं है कि कौन कौन था, बस बता दिया ये इसका काम था, इसका काम था, नाम पता नहीं. लेकिन वो राइटर थोड़ी था. ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेशन. ऑफिस बॉय का फ्रस्ट्रेशन क्या था? क्योंकि उसे लगता था कि सुबह कोई काम नहीं करता, वो बेफालतू का है और उसे हायर पोस्ट दे दी. सर उसे लगता था कि सुबह ने उसकी Yes. Narrator's work in the studio was to cut newspaper clippings. देखो सुनो, narrator's work in the studio was to cut कौन सा पेपर? Newspaper clippings. And stored them in files. कौन सा file? So everybody thought that he did nothing and continuously lectured him. Even the office boy came to tell him about the frustration regarding his failures. The narrator mentions that the office boy felt that the source of his problem was a man named कौन सा बेटा? कोथा मंगनम. हाँ, कोथा मंगनम सुब्बू. The number 2 at Gemini Studios. तो नंबर 1 कौन थे? वो जो बॉस होते, बॉस नाम क्या था? SS Basan. Okay. According to the office boy, Subbu did not deserve anything because he was neither well educated nor had any exceptional talent. His only virtue was being a Brahmin, due to which he got opportunities readily. सुबह का बहुत टैलेंट था ना बेटा? क्या क्या था? वो एक कोई मतलब किसी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना होता है तो वो 4 अलग-अलग तरीकों से दे देता था. Yes. मतलब कोई क्वेश्चन को 4 डिफरेंट मेथड में कर देता था, है ना? नहीं. मदद करता था. यस. अच्छा ठीक है. तो देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द ऑथर, सुबु का सिफर चीयरफुल वो साइड एक्टर भी था. man who was loyal to the chief. Subu ka chief or loyal to the chief. He could offer countless solutions to the problems of the film producer. Subu was also a कौन सा था? पोएट. सुबु का बी को उल्टा करेंगे तो पोएट बन जाएंगे. Who wrote poetry and masses. He composed story poems in folk refrain and diction. है ना? He recreated the mood and manner of the Devdasis of the early 20th century and even wrote a novel. क्या नाम था बेटा? नोवेल का नाम थिलाना मोहन MOHN मोहन अम्बाई. In addition, Subbu was an emerging actor too. Subbu was also a flatterer. He always said nice things about everything and everyone. His house was always crowded with acquaintances and relatives. He was
really close and intimate with boss, so had many enemies. अच्छा, एक लॉयर था, लॉयर का नाम क्या था? दिया लॉयर का नाम? लीगल एडवाइजर्स. अच्छा. The story department of the studio comprised of a lawyer and a group of writers and poets besides Subbu. The lawyer was the legal or illegal? Legal advisor. दिया ना, legal advisor, who had unintentionally brought about a sad end to the career of a talented actress by recording her outburst against the producer. The lawyer looked different from the other members of the department as he wore pants and tie, while they wore khadi dhotis, white khadis skirts. He was the close to the boss and was allowed to produce a film which flopped. The lawyer lost his job when the boss closed the story department. तो ये क्या था? लीगल एडवाइजर जैसे थोड़ी था. अच्छा एडवाइस देता था तो उल्टा देता था. इलीगल एडवाइजर यू कैन से. एक एक्ट्रेस की जिंदगी वो इलीगल टाइप बोल सकते हो. इसमें लिखा है गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड. लीगल वर्ड लिखा गई. लिखा है. क्या लिखा है? एक बार दिखा. The lawyer was also officially known as the legal advisor, but everybody referred वो इलीगल एडवाइजर बोल सकते as हैं. the opposite. ऑपोजिट इलीगल एडवाइजर, इलीगल बोल सकते. पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द स्टूडियो. पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या था भाई? Gemini Studio was a favorite place for the poets of that time. It is an excellent mess which supplied क्या कर देता था बेटा? सी फॉर coffee at all times. At the time, the Congress government had implemented provision and people enjoyed their Cup of coffee. leisure time over a cup of coffee. Almost everybody seemed to have ample leisure time at the studio. Most of the people at the studio greatly appreciated Gandhi. They opposed communism and thought communists to be the violent with no filial or conjugal feelings. Okay. अच्छा, स्टूडियो होस्ट क्या क्या था बेटा? एमआरए क्या था? मोरल रीअरेंजमेंट आर्मी, आर्मामेंट आर्मी. 200 people there, 20 nationalities. The Gemini Studio was a host to Frank Bachman's moral. Okay, इस बचमैन को किसी ने पढ़ के गया था और लिख दिया था बच्चन. बचमैन्स मोरल. उस टाइम पे अमिताभ बच्चन थोड़ी आए थे ना. ही री-armament army or the MRA which visited Madras in 1952. It presented two plays. क्या का नाम था? जोथान वैली and the Forgetting Factor, which were seen repeatedly by the members of the studio. The Tamil and Madras drama community were really impressed by them. The sunrise and sunset scenes of the Jotham Valley were reproduced in almost all Tamil plays in a similar fashion at that play. इसके बाद कोई एक विजिटर आता है. विजिटर वो कैसे था? मिस्टीरियस विजिटर है ना. Soon another visitor was going to visit Gemini Studio. The staff did not have any idea about him. कोई देखने आ रहा, उसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था. He was rumored to be a poet or editor. However, the guest arrived and the boss read out a very long speech that did not have much to say about the visitor. When the guest turn came to address the audience, his accent could not be understood by anybody. उसने ऐसा बोला था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था. ठीक है ना.
रिकॉग्नाइजिंग द मिस्ट्री मैन, उसको थोड़ा रिकॉग्नाइज का मतलब सभी ने कोशिश किया. द नरेटर देन रेफर्स टू अनदर इवेंट, ए शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट to be organized by British periodical by the name The Encounter. The narrator wanted to have an idea about the periodical credentials before participating in the contest and spending on the postage. Hence, he checked at the British Council library and found no information except that editor's name was Stephen Spender. He recalled that this was the same editor who was a guest at the Gemini Studios. Okay? उसको बाद में पता चला था, है ना? The God that failed. The God that failed. भगवान भी फेल हो गए. ठीक है ना? Some years after leaving his job at the Gemini Studios, the narrator bought a copy of a book, The God That Failed, which was re-released on the 50th anniversary of the Russian Revolution. It was a compilation of 6 essays by 6 different authors on the journey into communism and the disappointment written. When the narrator found that Stephen Spender was one of the contributors, he realized the purpose of his visit to the studios. Okay, उसमें वो था ना बेटा. When the narrator found that Stephen Spender was one of the contributors, तो उसमें जो दिया था ना बेटा, जिसमें वो रेवोल्यूशन में 6 ऑथर थे ना, उसमें से एक था, है ना. और इसीलिए यहाँ पे भी पोएट वगैरह आता है, इसीलिए वहाँ पे विजिट करने आया था, लेकिन उसका भाषा किसी ने समझ नहीं पाए थे, है ना. ऐसे तो होता है, कोई आया लेकिन उसको कोई समझ नहीं पाया. पोएट्स एंड पैनकेक्स. ओके, ये तो थोड़ा थोड़ा पता चल गया, थोड़ा पूरा ही पता चल गया ना.